Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crictime Podcast. And before we get into today's discussion, भाई बहुत सारी चीजें discuss करनी है. India has announced their squads for the three tours that they're doing. Well, not the three tours, but the series against South Africa, the T20s, the ODIs, the Test match. और फिर उसके बाद बहुत सारे other fixtures भी आ रहे हैं. फिर IPL की news भी आनी शुरू हो गई है because a mini auction's about to take place, and whether the IPL is actually held fully in India or not, because of obviously elections and all that sort of stuff happening in 2024 is another consideration. The window that the ICC has given as well is another topic. But before we get into any of those things, make sure you guys subscribe, make sure you leave a like rating, make sure you follow us for all of the on all of our social media pages for the latest news. Bhai, I'm trying to get it really quickly, but थोड़ा relax करते हैं because World Cup खत्म हो चुका है, हार चुके हैं. T20 series against South Africa, against Australia is going really well as well. But after that, so yes, we've got a lot of games coming up. In the cycle of 2023 November all the way to 2025 January, we're playing 17 test matches, almost 21 T20s and 17 ODIs, excluding obviously the T20 World Cup plus the IPL schedule. By बहुत सारे matches आने वाले इंडिया के, and they're almost playing in every quarter. ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, वो इंडिया में भी खेल रहे हैं all the way till May in the IPL. बीच में वर्ल्ड कप आ जाएगा, तो you're going to be seeing India and the Indian players in action. So Yash, before we get into discussion, भाई वर्ल्ड कप की थोड़ी इजी हुई या अभी भी या स्ट्रगल कर रही एक्चुअली वही मतलब फाइनली मस्टर्ड द करेज ऑफ कमिंग टू द पॉडकास्ट. मैं आई थिंक यू रिकॉर्डेड द शॉर्ट एपिसोड इससे पहले, बिकॉज सॉरी फॉर दैट आई डिडंट हैड द करेज टू स्पीक बिकॉज अभी फाइनली आई हैव द अभी आई एम बैक एंड होपफुली आई विल कंटिन्यू. बट वही है कि कितने दिन हुए हैं, आई थिंक 10 days हुए हैं फाइनल के, है? एंड ऑलरेडी इट सीम्स लाइक एक साल हो चुका है. द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी ट्रांसपायर्ड. सीरीज एक चल रही है जो कि भाई क्या सीरीज चल रही है वो. एंड देन ऑफ कोर्स ऑफ द फील्ड इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि आई थिंक आवर पॉडकास्ट माइट जस्ट बी टू लेस टू talk about everything, but ठीक है, we'll have other episodes as well. So yeah, I mean, finally having the motivation to talk about everything. Looking Exactly. forward. I think भाई हर गेम में मैं इंडिया का स्कोर देखता हूँ. we've been reaching that benchmark of 230, 240, 225. मैं सोचता हूँ यार 20 ओवर में 240 बना लिए थे, फाइनल में 240 बनाए थे 50 में, वो भी स्ट्रगल कर करके. भाई कितना अच्छा खेला था ऑस्ट्रेलिया ने, जो 240 बनाना मुश्किल हो गया था. बट वही है, चलो, दिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज इज been going on for a while, and India generally are playing well, but we can both see कि भाई ये सीरीज इज नॉट अ गुड इंडिकेशन ऑफ वेदर दिस T20 टीम इज गुड और नॉट, क्योंकि भाई दोनों टीमें ही 200 बना रहे हर मैच में. इट्स अ कम्प्लीटली बैटर्स गेम, सारे बॉलर्स गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ द पार्क. इंडिया ने तो अपने मेन बॉलर्स खिला भी नहीं रहे. we've got like Mukesh Sharma playing, Prasidh Krishna playing, and all of those kind of B team, yeah, India A team bowlers. And for Australia as well, most of their players are gone except the batters. थोड़े बहुत हैं जो वर्ल्ड कप से आए वापस. Josh Inglis हो गया, Maxwell, the way he played last game as well. Just a bit about the Australia series. What are your thoughts? भाई इंडिया जीत पाएगी या are we gonna fumble this again? क्योंकि भाई आई टू थिंक नहीं, गेम्स से जीते थे. विल विन फॉर श्योर. उन्होंने बस ऐसे ही मतलब आई थिंक मे बी मैक्सवेल का आधार कार्ड बनवाना है इसलिए रोक के रखा हुआ है उसको. हेड को भी आई डोंट नो क्या है. मतलब दे आर टेकिंग इट टू लाइटली. आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेड ने बोल भी दिया था, राइट, कि वो तो सो व्हाट दैट वी लाइक लॉस्ट 2 मैचेस, वी वॉन व्हेन इट मैटर्ड. तो वहीं पे आप देख लो कि वो कितना सीरियसली ले रहे हैं सीरीज को. एंड स्टीव स्मिथ से ओपनिंग करवा रहे हैं. दे आर ट्राइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू बी वेल इक्विप्ड. बिल्कुल भी उनकी ये टीम नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर स्कोरिंग 220+. बिल्कुल भी इससे कुछ भी ले जाने के लिए नहीं है. हाँ, एक चीज है ले जाने के लिए कि अपने ओपनर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड. एंड ऑल्सो रिंकू सिंह, आई थिंक अ ग्रेट प्लेयर. वी शुड बिग शाउट आउट टू हिम. We should nurture, give him more opportunities in the upcoming series, which I obviously will discuss the teams that are out. But I think बहुत अच्छी opportunity. और एक चीज और यार, प्रसिद्ध कृष्णा जिसको वर्ल्ड कप में लिया था, वेरी डिसअपॉइंटिंग. मैं उस समय भी बोल रहा था क्यों लिया है. क्या क्या किया है बंदे ने, किसको घूस खिलाई है कि वो खेल रहा है टीम में. एंड he proves me right with every game that happens. 4 over 68 runs, couldn't even defend 25 odd runs in the final over against the same Maxwell who was just one dream game in the entire World Cup. Apart from that, he was nothing more than shit. तो ऐसे एक उस वर्ल्ड कप टीम का Yeah. एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो है, उसको वही आके रन मार देता है. जॉस इंग्लिश दूसरा खिलाड़ी, वो भी फर्स्ट मैच में रन मारा था. ठीक है यार, ट्रेविस हेड को आउट, ट्रेविस हेड ने भी मारा ही था यार, आउट कर लिया आपने, ठीक है. बट सो अभी जो 2-3 बचे हैं वही आपकी टीम को धो दे रहे हैं. तो ठीक है यार, जीत रहे हो, बट किसके खिलाफ. आई कॉल दिस इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है.
और उसमें इंडिया ए जो है अभी 2-1 से लीड कर रही है. होपफुली विल रैप इट अप, बट या दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ एनीथिंग. Yeah, exactly. But when I look at that squad, no disrespect to anyone playing that, but you just look at that and you say कि भाई इसमें से majority players ऐसे हैं जो net bowlers होंगे या just traveling squad के members भी हो सकते हैं to a maximum degree, but ये playing 11 पे तो नहीं आते in terms of in the World Cup in the major matches. Obviously, this is a good time to give all of those senior players and all of those experienced players a break after the World Cup, and that's why they've brought all of these guys in to be like, चलो आओ खेलो थोड़ा बहुत, experience लो, and the IPL will probably be the best indication in terms of who to pick for the T20 World Cup. But leading up to that, obviously we've got the South Africa series starting. 3 T20s, 3 ODIs, and 2 Test matches. The squads have been announced. पहले बात कर लेते हैं भाई T20 squad की, because that's the first one that's going to be coming up. And Surya Kumar Yadav retains his captaincy in that format. Bhai, like Ravi Shastri or Harsha Bhogle said in the commentary during the Australia game, how do you stop Surya Kumar Yadav? And Matthew Hayden said, tell him it's an ODI game. And realistically, if there's anyone who could lead this India squad in the T20 format, except Hardik Pandya, it would have to be Surya Kumar Yadav, obviously, without the presence of Rohit Sharma being there. But I think no complaints from him. Just squad abhi hai, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Rituraj Gaikwad, Tilak Verma, Rinku Singh, Shreyas Iyer, Ishan Kishan, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Ravi Bishnoi, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Mohammad Siraj, Mukesh Kumar, Deepak Chahar, and Jitesh Sharma as the backup wicketkeeper. I think generally you look at that squad, it's pretty much similar to the squad that's been given to Australia. एक दो changes है, as we mentioned before the podcast. Mohammad Siraj comes in, Kuldeep Yadav comes in, and Jadeja returns as well. Other than that, pretty much everyone else. And I think to be that this looks like a very balanced and a very good squad of experienced players who are most likely to go to that World Cup, plus a lot of players who need that confidence, who need that experience just to give themselves that motivation towards maybe the next T20 World Cup, your next ODI World Cup, your major tournament. I kind of agree with all the points that you mentioned. Just one cheese which I would disagree is Surya Kumar Yadav की captaincy. Although I think it's fair to cut some slack क्योंकि अभी ज्यादा मैचेस किए नहीं उसने कैप्टनसी, बट आई थिंक थर्ड मैच में 6 ओवर्स में 92 रन चाहिए थे एंड ही गेव अवे दैट्स नॉट अ ग्रेट कैप्टनसी. कभी भी आप एंड दे वर आई थिंक 4 और 5 डाउन, सिर्फ मैक्सवेल बचा था उनका, एंड टू बी एबल टू लूज द गेम फ्रॉम दैट सिचुएशन, I think he has still a lot to learn as a captain. Plus, given the fact that Ravindra Jadeja है team में, and Ravindra Jadeja is okay to become a vice captain, which means he's also okay to become a captain. So I am very surprised कि Jadeja के होते हुए team में why they are selecting Surya Kumar Yadav over. Maybe the reason is because Surya Kumar Yadav is like a by default selection in any T20 squad of India, versus maybe Jadeja को कभी कभी ना खिलाया जाए, especially in fast conditions of West Indies. तो वो एक reason हो सकता है, but otherwise, yeah, I think apart from captain, I think that nothing much to really. I was hoping maybe Shubman Gill, but again debatable whether उसको T20 में होना चाहिए कि नहीं. गुजरात टाइटंस के लिए he plays very well, but of course ये भी हो सकता है कि उसको मतलब वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट दे रहे हैं, but I don't know if that is the rationale. But to me, so Shubman Gill not being in this squad is a bit of a surprise. What are your thoughts on that? But he's in the T20 squad, no? Shubman Gill in the T20 squad तो है. Oh right, he is Yeah. in the T20 squad. Yeah, Okay, I think sorry. yeah, that's the ODI squad we're going to be Oh talking yeah, about. But yeah. I think generally, again, मेरे लिए तो भाई देखो, with Rohit and Kohli both saying कि leave us out of the shorter format of the games, white ball cricket से हम लोग को थोड़ा दूरी रखो, and we'll let you know what our decision is in terms of the World Cup. It is very clear that they should look forward, which is why I'm very happy with the fact that they've got Shubman Gill in here. They've got Yashasvi Jaiswal, two brilliant openers capable of carrying India. Gaikwad as well, to a certain degree, can help out in that situation. And the best part is with you've got a good middle order as well, with Shreyas Iyer and Ishan Kishan coming in, plus Rinku and Surya right at the end. With Rinku, bhai, as you mentioned briefly, we mentioned this कि भाई the way he's been playing, उसके साथ best part मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये लगी, he's not just hitting for the reason of hitting the ball कि भाई छक्का चाहिए तो छक्का मारना है चाहे कोई भी बॉल आए. He is picking the perfect balls to say कि भाई this ball is gonna go for a 6, this ball 4, this ball Yes. single लूंगा, और वही exactly चाहिए. क्योंकि yes, T20 is very rash where you need a quick 30. If you look at the IPL 5 years from ago, उसमें 50 का काउंटर आता था नीचे कि भाई this player has X amount of 50, and now they've changed to 30s because they realize कि भाई scoring 30 at a strike rate of 160 170 is more dangerous to
a 50 at 110, 115 की strike, because they realize that T20 is shifting more towards becoming more of a batter's game, and we need that right now. So you have, I think, generally in terms of batting, अगर बात करी जाए squad में, तो we've got a lot of talent as well as Tilak Verma in there as well. मैंने उसको obviously इतना देखा नहीं. We've seen him in the West Indies tour, but in terms of the players that I mentioned specifically, I'm very excited to see how these guys do, especially in foreign conditions, in South African conditions. India में तो obviously भाई हैं हम लोग champions अपनी पिचों में, maybe except the final itself. But other than that, I think it's very interesting to see how these guys perform outside of India. In terms of bowling, I think maybe this is because it's in South Africa, and South Africa में थोड़ा pace conditions होती हैं. It assists, the faster bowlers more. Are you surprised that Ravi Bishnoi has not been picked in the T20I squad, given he didn't perform that bad in the T20I so far? I think for me, when we talk about, but Bishnoi तो है ना वो T20 में. I think you're looking at the ODI squad. हाँ. Oh, sorry, Bishnoi, yeah. हाँ. दो गलती कर दिया अभी. नहीं नहीं. Bishnoi is in the T20. भाई देखो, for me मुझे bowling में अगेन वॉशिंगटन सुंदर तो मुझे एज अ प्लेयर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. पहली बात तो मे बी इन द 15 यू हैव हिम, बट डू आई सी हिज प्लेस इन दैट playing 11? No, because you've got someone like Jadeja who can offer spin and bat as well. You've got someone like Kuldeep who's a very good spinner, जिसने भाई 2021 के बाद जो उसने अपनी जो redemption arc करी है. When you've got people like them, do you see Washington Sundar being in that playing 11? That's why that's the only kind of issue that I have right now with this. उसका एक एडवांटेज है ओवर अदर स्पिनर्स इज कि वो पावर प्ले में बॉलिंग करा लेता है T20 में. लाइक he kind of even starts the bowling at times. Maybe that is one reason उसको खिलाया. दूसरा हो सकता है जडेजा का backup like for like replacement. But just another point which I am seeing a transition in this current Indian team is मतलब it's almost like a paradigm shift कि पहले हमारी टीम में लेफ्ट हैंडर्स होते ही नहीं थे और अभी सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स हैं हमारे बैटिंग ऑर्डर में. आई थिंक अदर देन ऋतुराज गायकवाड़ एंड सूर्य कुमार यादव in the current team. Shubman Gill तो अभी आ गया, but like in the Australian वाला में तो there's just these two, and apart from that everyone is left-hander. So I mean really really interesting क्योंकि I think left-handers are quite a different ball game altogether. क्योंकि मैंने कभी इससे पहले इंडियन टीम में इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं देखे थे. देखते हैं how we perform in the long run with these left handers. But I think in the World Cup we kind of realized that maybe we don't have a lot of left-handed options. Ishan Kishan था obviously एक World Cup squad में, बट अगर आप नोट करो प्लेइंग 11 में बहुत ही कम लेफ्ट हैंडिंग ऑप्शंस नहीं थे. हाँ, एक जडेजा ही था बस आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स. तो यू लुक एट दैट एंड यू गो मे बी दे रियलाइज कि भाई लेफ्ट हैंडर्स एटलीस्ट बैकअप में तो होने चाहिए, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसेट टू हैव. नॉट एवरीवन कैन bowl to left-handers. There's a specific way to bowl to them, and they've got their certain set of skills. So generally when I look at this squad, with Siraj coming back, Mukesh is performing pretty decent as well. Like, congratulations on his marriage as well. But with Deepak Chahar being, भाई मुझे दीपक चाहर तो मुझे ज्यादा होप है नहीं उसमें. आई थिंक वो तो आईपीएल कोटा नहीं होता कि भाई 15 करोड़ 16 करोड़ का बिकता है, ये इसको ले लो भाई, ये अच्छा ही होगा अगर इतने का जाता है. शार्दुल, बट आई थिंक ही इज बेटर देन शार्दुल क्योंकि बैटिंग ही आई थिंक जनरली. बट अगेन साउथ अफ्रीका में मे बी शार्दुल डज बेटर बिकॉज़ भाई शार्दुल in Australia, in England performed really well in those certain conditions. South Africa थोड़ी उसी टाइप conditions होती हैं. Spin offered आता है, but वो obviously shorter format में इतना होता नहीं. But again, when I look at this squad, I say India should win this series. I think generally, it'll be Australia के पास भी not Australia, South Africa के पास भी बहुत अच्छे hitters हैं, but I think India should win this series. That's a bold one क्योंकि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कोई भी सीरीज हराना किसी भी टीम से it's an achievement. तो let's see. I think young team है, कोई risk नहीं है ना इतना. Nothing to lose. Exactly. They've got everything to win for and nothing to lose. So baggage लेके नहीं आ रहे हैं लोग कोई. But एक I hope I get this one right कि Akshar Patel is not in this team. He is there in the Australia वाला tournament. So I don't know what's the reason. He's even included in the other squad, ODIs में, but not in the T20. It's an interesting move. I'm also surprised about Yuzi Chahal as well. He could have been someone that could have been considered for this maybe क्योंकि भाई IPL में highest wicket taker है, and yes ठीक है वो conditions maybe थोड़ी different है from South Africa, but somewhere you want to bring him back and build up his confidence because भाई World Cup में selection नहीं हुआ. That would have been a very very big hit for him क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जिसको लगा था कि उसका तो नाम सबसे पहले आने वाला है क्योंकि भाई IPL में इतना अच्छा परफॉर्म करता है. He's almost taken, averages 15-16 wickets almost a every. Exactly. So when you look at those stats, you say, okay, this guy is your key bowler in India.
और आप उन्हीं पिचेस में खेल रहे हो जिसमें आईपीएल खेला इवन जाता है। इवन इन द सॉरी इन दिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जब हम्म। टीम आई थी तो उसने उसमें क्रिप्टिक भी नहीं। इमोजी सा ट्वीट किया था, आई थिंक विच वही ऑब्वियसली राइडू मेंट वाली दैट ही सिचुएशन वाज होने वाली है ये, रेटेड. वेयर द बीसीसीआई की ईगो और इसकी ईगो दोनों क्लैश करेगी एंड इन द एंड But he वही has been बेचारा added फंसेगा। in the ODI squad. That means that he's in the long-term plans. बट why test him out in the ODIs and not T20s, you know? भाई वो I don't know. अजीब बात है. Like they um, maybe they're not considering him in the shorter format, क्योंकि वही है कि थोड़ा वो जब मार खाता है तो खाता ही चला जाता है. But again विकेट लेता है यार वो. He's a wicket exactly, taking bowler, which is it's strange that try तो करो यार. मतलब he's a great bowler I exactly. think. Especially Yeah. when in the squad you look at it, you को जडेजा बैटिंग कर सकता है, वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर सकता है, बिश्नोई आई haven't seen much of him, but you say कि भाई दो ऑलराउंडर हैं आपके पास। दीपक चाहर को आपने इसीलिए रखा है कि वो शायद टेल में आके कुछ रन मार दे, प्लस वो अच्छी बॉलिंग करा ले। You could have replaced him चहल and probably how that Yeah, but combination went as well. इस टीम में इवन लाइक रिंकू एंड तिलक आर बेटर बॉलर्स देन रोहित एंड विराट, राइट? तो ऑब्वियसली वो भी एक ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो. भाई हो सकता है, द्राविड भाई when he signs his new contract maybe he comes in first performance like भाई तिलक वर्मा and रिंकू सिंह प्ले 8 ओवर उनसे कराए जाएंगे पूरे गेम में। yes, it'll be an interesting one. So what's your predictions for the T20s? Do you think India is going to take it away, or do you think South Africa will? I think it will be a 2-1 result. Could be. I am inclined to more on South Africa. मतलब realistic बात कर रहा हूँ. Obviously, I Hmm. want India to win, but I think 2-1 South Africa might just sneak it. But Hmm. I'll not be surprised if India sneak it 2-1 as well. It won't be a whitewash from either side. Yeah, I think both the close matches. It'll generally go very close, and then towards the end, where whoever can hold on their nerve. We can call it chokers versus chokers as well to a certain degree. भाई उन्होंने To a certain सेमीफाइनल day, to every degree. उन्होंने सेमीफाइनल करा, हम लोगों ने फाइनल करा तो कुछ ये इतना वो सेकेंड T20 आई कौन सी लोकेशन है यार? ये तो मैंने um, आज तक कभी साउथ अफ्रीका में GQEBERH वो होगा सेंट जॉर्जेस ओवल आई डोंट नो होगा, मैंने आज तक सुना पोर्ट नहीं पोर्ट था. एलिजाबेथ होगा सेंट सेंट जॉर्जेस पार्क या हाँ, तो that's पोर्ट एलिजाबेथ आई थिंक, तो पोर्ट that's एलिजाबेथ. तो नाम चेंज कर दिया है कुछ. probably कोई sponsors or something, something to do with that. But yeah, ODI series, जो right after, quite a few changes in that. KL Rahul will be captaining that series. उसमें कोई vice captain declare किया नहीं गया है, which is a bit of a surprise. उसमें कोई किसी को बताया नहीं vice captain कौन है, सभी कर लो captaincy. But you've got Gaikwad coming back in, Tilak Verma also carrying on, Rinku Singh, Shreyas Iyer, all of these guys carrying on with Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, and Deepak Chahar. Those are the names that will carry on from the T20 squad. And then Sai Sudarshan comes in, Rajat Patidar comes in, KL Rahul as your captain, Sanju Samson by a name we've all been waiting to hear in the Indian lineup. Absolutely. Akshar Patel comes into the squad alongside Yuzi Chahal, Avesh Khan, and Arshdeep Singh. Let's talk about Sanju, because that's a topic that I think we've all known. भाई क्या हो क्या रहा है यार, कितना टाइम क्यों लग रहा है इंडिया को चांसेस देने आई इसको? स्टिल स्ट्रांगली बिलीव कि उस दिन वर्ल्ड कप फाइनल के दिन अगर सूर्या की जगह संजू होता वी माइट हैव स्कोर्ड सम 20-30 एटलीस्ट मोर रन्स. आई डोंट नो व्हाई ही इज ऑलवेज इग्नोर्ड. टू बी वेरी फेयर टू हिज फैंस एंड टू हिम, he has performed not 100% of the times but at least 70% of that. That should be enough. मतलब मैं जानता हूँ कि आपने 2018 से लेकर 2022 तक केएल राहुल को कितना बैक किया है, तब जाके वो ऐसा प्लेयर बना है आज. तो आप क्यों सेलेक्टिवली बैक करते हो कुछ प्लेयर्स को, क्यों नहीं करते हो? आई थिंक जो जो भी संजू फैंस है जिनको हैवी क्रिटिसिज्म मिलता है जब संजू फेल करता है, आई थिंक दे हैव अ वेरी फेयर पॉइंट कि व्हाई डज ही नॉट गेट अ फेयर रन ऑफ कंसिस्टेंट क्रिकेट in the Indian team. He is a great talent. It's just that we have not been able to utilize him properly the way any other team would have utilized him other than India. So I'm very unfortunate for him, and I hope कि इस बार उसको टीम में लाए हैं तो कंसिस्टेंटली उसको 2027 वर्ल्ड कप के प्लान्स में रखते हुए लाए हैं. एंड आई होप कि उसको अगली ही सीरीज में ड्रॉप ना कर दिया जाए. एनीवेज आई थिंक ओडीआई में लाए हैं. ओडीआई के तो ज्यादा मैचेस ही नहीं है 2024 में. तो आई डोंट नो मैन. आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस इन अदर फॉर्मेट्स एज वेल, बट लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स. Exactly, भाई अगर आप ODI की सिर्फ let's even if we're talking just about ODIs, this guy's played 12 or 13 games and he averages 55 at a strike rate of 104, and most of these granted might be against West
Indies or the weaker teams, but he's still someone that India has not given enough opportunities to. संजू सैमसन को हम लोग IPL में देखते आ रहे हैं कितने जमानों से, एंड हर साल यही बात होती थी कि मे बी दिस टाइम विल गेट सिलेक्टेड, अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा, एंड इट्स लाइक जब मिलता भी है उसको तो ऐसे ही टाइम पे मिलता है कि प्लेयर्स नहीं है चलो संजू को खिला दो, ये नहीं मिल रहा चलो संजू को खिला एग्जैक्टली। दो. इट्स नेवर अ थिंग ऑफ के लेट्स promote him to a point where he plays the next 5 series, the next 5 games, या consistently plays. भाई जीरो पे आउट हो रहा है, करने दो, बट खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो. Let's see, एग्जैक्टली। let's test him out in different conditions. And I think you're right in saying that in the World Cup we might have been better. Obviously it's a lot of ifs and buts and a lot of या preemptions के भाई ये कर सकते थे, ये कर सकते थे. Now it's easier to say, but फिर भी we all felt this when we saw Surya in that squad कि and I think you mentioned it, you said कि हार्दिक अगर आउट हुआ इस वर्ल्ड कप से या इंजर हुआ तो बहुत प्रेशर आएगा सूर्या पे एंड वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड. Whereas अगर we might have had Sanju, it would have been a different case, maybe, but again it's very ifs and buts kind of statement. But वही है, आई थिंक संजू सैमसन को इतनी अपॉर्चुनिटीज अभी तक दी नहीं है आपने, ना ओडीआई बस में दी है ना एक T20s में चीज दी और है. यार, तो मतलब आप देखो कितने सालों से इज एन आईपीएल कैप्टन, इज अ लीडर मटेरियल। इफ विकेट कीपिंग जब वो करता है, ही सो कूल एंड काम एंड रिलैक्स्ड इन द फील्ड, मैनेजेस द टीम सो वेल। आप एक बहुत बड़े टैलेंट को मिस आउट कर रहे हो। आई डोंट नो, प्योरली मिस मैनेजमेंट, आई डोंट कॉल इट पॉलिटिक्स, इट्स प्योर मिस मैनेजमेंट एंड इग्नोरेंस ऑन द पार्ट एग्जैक्टली. ऑफ लाइक मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स, आई डोंट नो, बट इट इज। एक चीज और, मूविंग ऑन फ्रॉम संजू सैमसन, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एज यू मेंशन्ड कि बस कैप्टन ही है, वाइस कैप्टन नहीं है। सो इज इट अ स्टेटमेंट दैट द टीम इज मेकिंग फॉर लाइक अगेंस्ट श्रेयस अय्यर? क्योंकि श्रेयस अय्यर वाज आल्सो इन द मिक्स ऑफ कैप्टनसी एट सम पॉइंट इन टाइम of the Indian team, और वो है टीम में, but he is not even the vice captain, which is very very surprising to me, because according to me Shreyas Iyer is also, मुझे वो पर्सनली उसके एटीट्यूड, द वे ही हैंडल्स प्रेस, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखता है मुझे उसकी बातों में। सो आई पर्सनली डोंट लाइक हिम एज अ मीडिया पर्सन, बट एज अ लीडर विद इन द टीम, क्या टीम उसको एज अ, डज द टीम अग्री विद माई थॉट कि ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ लीडर, मतलब वो क्रिटिसिज्म ले नहीं पाता है एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेक करने की कोशिश करी, और इज जस्ट दैट दे फॉरगॉट टू मेंशन अ वाइस कैप्टन। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ फॉरगेटिंग. मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई श्रेयस तो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेलेगा, और आई डोंट नो, मुझे आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज भाई वो यंग है, ही नीड्स सम नर्चरिंग. ऑब्वियसली आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्टनसी करी भी है श्रेयस ने शायद कुछ सीजन्स, या करी थी या क्या था, करिए देयर वाज करिए, अ पीरियड एक, राइट. यस हाँ, यस। तो आई डोंट नो, मे बी इट कुड बी द केस. अगेन इट्स ऑल इंटरनल पॉलिटिक्स भाई इसमें. It was because he got injured. That's why Rishabh हम्म. was handled the captaincy, and Rishabh did well before he got injured himself. So हाँ, he was the समथिंग, captain. you're right, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है. मे बी आई थिंक इट कुड बी, या तो दे कम्प्लीटली फॉरगॉट, बट इट सीम्स हाईली अनलाइकली, बिकॉज T20 स्क्वाड्स में है कैप्टन Hmm. वाइस कैप्टन सब कुछ. टेस्ट मैच स्क्वाड में बताया हुआ वाइस कैप्टन कौन है, दोनों विकेट कीपर कौन है, सिर्फ एक यही एक फॉर्मेट है जिसमें एक वाइस कैप्टन ही नहीं डिक्लेयर किया. तो इट कुड बी, आई गेस, Because एटीट्यूड if you प्रॉब्लम see या other समथिंग. than देखो कि मैं वही खोज रहा था कि केएल राहुल के हम्म. अलावा who else can be the captain? Who else is like very like a bit experienced? तो I only see श्रेयस अय्यर और कुछ हद तक अक्षर पटेल मे बी, और यूजी चहल तो एनीवे स्ट्रगल कर रहा है टीम में आने में। हम्म. तो obviously श्रेयस अय्यर is the straightforward vice captain. If you have selected vice captains in other formats, why did you specifically miss in ODIs? It doesn't make sense to Yeah, me. I don't. it doesn't. It's a good pick out. I think this is a good kind of thing to inquire. बीसीसीआई के ऑफिस में कोई तो बैठ के नॉक करके कह रहा होगा, भाई आपने वाइस कैप्टन वगैरह करे यार, हो जाता. वही मतलब, maybe it's a statement to It could be, yeah. श्रेयस I mean, अय्यर yeah. कि भाई देखो, it could literally just be कि भाई they didn't pay enough attention, which I highly doubt, क्योंकि भाई they're not sitting there getting paid millions to ignore something like that. But at the same time, exactly. it could literally just be a statement by saying, भाई श्रेयस सुधर जाओ थोड़ा, थोड़ा लाइन में आओ, फिर वाइस कैप्टनसी लेना. He ऐसा ही मुझे gets लगता है. injured a lot as well, right? Like Yeah, abhi Hardik Pandya is unavailable, right? Otherwise he would have been in yeah. the mix of leadership in at least one or two formats. आई तो थिंक वो टी भी ट्वेंटी एक तो उसी reason को मिलता. T20 फिर हार्दिक को ही मिलता जनरली. बट अगेन वही है ना कि डू यू वांट समवन लाइक हार्दिक टू बी लीडिंग व्हेन यू नो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स तो वो इंजर्ड रहता है, या लास्ट फ्यू इयर्स में नो डाउट जो द गेम्स दैट he's played, he's performed really well, he's done what he can for India, but again it's one of those के you need someone who can play every game, not
come in and do the job and miss out another 4 or 5 games after that. You want regulars in that squad itself. But yeah, so another interesting series, 3 games, and I think Dicock retired, तो वो तो ऑप्शन से बाहर है. बट साउथ अफ्रीका की टीम बिफोर द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन दिया था. एंड देन इंडिया में भी आके बाकी सारी टीमों को कंपटीशन दिया था, मे बी एक्सेप्ट इंडिया. एंड इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो भी दे लॉस्ट टू द वर्ल्ड चैंपियन. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड से कि भाई दिस इज गोना बी अ वेरी टफ कंपटीशन फॉर इंडिया. यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि भाई कुलदीप और जडेजा के 10-10 ओवर करा के आपने 6 विकेट ले लिए और टॉप ऑर्डर अपना कोलैप्स करवा दिया. क्लासन इज गोना बी इन फॉर्म, एडन मार्करम विल बी देयर. टेम्बा एट बवूमा देयर की होम। स्टैट्स होम में बहुत जबरदस्त है. ही इज द हाईएस्ट स्कोरर, 88 का एवरेज है होम में. तो यू विल हैव टू go in there and say that these guys are as good as any other team. So I think if I had to make predictions, I'll say 2-1 South Africa. This one I see South against India, and if this happens, it will cause a lot of uproar in the media. Final में जाके आपने हारे, फिर ODI World Cup में इसके बाद आप ये सब हारने लगे, going to be a lot of questions being asked on leaderships and coaching. I think India stands a chance only if our bowlers perform. I don't see enough experience in this bowling lineup to be going out there the first time South Africa. मतलब at least on paper मुझे तो confidence नहीं आ रहा. I see a 2-1 South Africa or a 3-0 South Africa. Yeah, you're right. अगर I हम don't एक see मैच भी leader जीत in जाते हैं terms it'll of be bowling. अगर हम not in the batting. I think batting is ठीक है. KL Rahul is there. Iyer is there, even Samson is there. But bowling में मुझे कुछ ऐसा spinners हैं, मतलब कुलदीप चहल आर एक्सपीरियंस, बट साउथ अफ्रीका में यू नीड एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जो कि आई एम सरप्राइज सिराज क्यों नहीं है इस लाइनअप में. सिराज शुड हैव बीन देयर गिवन कि आप उसको T20 खिला रहे हो. मे बी बिकॉज दे डोंट वांट हिम टू प्ले इन ऑल द फॉर्मेट्स, वर्कलोड मैनेजमेंट. बट डोंट नो मैन, आई सी इफ इवन इफ केएल पुल्स ऑफ वन विन इट विल बी एन अचीवमेंट फॉर हिम. हाँ, you're right. Bowlers में कोई एक लीडर नहीं दिख रहा. Usually you have someone like Siraj, Shami या बुमराह, one of those guys at least there to give the youngsters a lot of guidance. और जितना भी आप कह लो, ये सब मैटर करता है, क्योंकि जब आपके पास you play in a high-fi international game, every practice you've ever done just goes out of your mind and you suddenly start doing things you've never done before. वो wides, extras and importance of experience in the squad. exactly. ये जो है, who would know better than the coach of our football team Chelsea. उसके बारे में बात नहीं करते हैं. जिंदगी में दुख बहुत चल रहे हैं. मैं एक्चुअली जा भी रहा हूँ संडे को गेम देखने, तो आई होप ब्राइटन को हरा देंगे भाई. ब्राइटन को हरा भाई कुछ नहीं कह सकते. इस टीम ये और इंडिया की टीम कुछ भी कर सकते हैं. कहाँ पे है ब्राइटन वाला? लंदन में ही है. लंदन ही तो है दोनों. बढ़िया. तो चेल्सी को छोड़ते हुए बढ़ते हैं आगे टेस्ट मैच की तरफ, जहां हमारे युद्ध खिलाड़ी सॉरी एक चीज और फाइनल की. फाइनली एज यू सेड, डिकॉक हैज रिटायर्ड, सो अब टेम्बा बुमा को पॉलिटिक्स नहीं करनी पड़ेगी. ही एंड हेंड्रिक्स कैन बोथ प्ले. That is a good observation. पहले तो भाई साउथ अफ्रीका ने तो अपनी स्क्वाड ही नहीं अनाउंस करी अभी, तो वी कांट रियली से उनके बारे में, उनकी तरफ से, उनकी पर्सपेक्टिव से क्या उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं. बट मूविंग ऑन टू द टेस्ट मैचेस, हमारे दो जबरदस्त कहें जी सीनियर प्लेयर्स, युद्ध कहते हैं शायद, आई होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड हियर, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटर्न, जिन्होंने दोनों ने कहा था कि भाई शॉर्ट फॉर्मेट से हम लोग को थोड़ा दूर रखना है, हम लोग को व्हाइट बॉल से अब एलर्जी हो रही है थोड़ी. अभी रेड बॉल खिलाओ, फिर उसके बाद पिंक में आएंगे, फिर उसके बाद खेलेंगे व्हाइट बॉल आईपीएल में. बट रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशन किशन, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा. आई थिंक इफ यू लुक एट दैट स्क्वाड राइट ऑफ द बैट, दो इम्पोस्टर्स हैं स्क्वाड में, वो है मुकेश कुमार एंड प्रसिद्ध कृष्णा. उसके अलावा दिस स्क्वाड इज रेडी टू टेक ऑन एनीवन इन द वर्ल्ड. You were trying to mock the wrong Kannadiga, I think. केएल राहुल को नहीं, तुमको प्रसिद्ध कृष्णा को पकड़ना था. अब मुझे नया टारगेट ढूंढना पड़ेगा. अब मैं नहीं कह सकता यार केएल के बारे में. मैं केएल के बारे में कहूंगा, मैं खुद वीडियो जब एडिट करूंगा मैं कहूंगा यार मैंने कैसे बोल दिया है यार इस बंदे ने. What on earth has प्रसिद्ध कृष्णा done to earn this spot? I completely fail to understand, man. Like क्या किया है बंदे ने, क्यों है इस स्क्वाड में? Like you could have, मतलब मैं पढ़ रहा था 40, हाँ मेरा भाई बता रहा था कि 45 different players have been offered visas to South Africa. अरे भाई तुम दीपक चहर को ले गए हो, why can't you play दीपक चहर
मतलब क्या है ऐसा प्रसिद्ध में जो दीपक में नहीं है? है ना, क्या इसके है कोई प्रसिद्ध में? स्टैट्स है भी नहीं इतने अच्छे कि आप कहो कि यार ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास स्टैट्स भी कोई इतने जबरदस्त नहीं है कि आप कह सको कि ही डिजर्व्स अ चांस, कोई वो इतना आई वो डोंट नो नहीं है। मैन, क्या, आई थिंक मे बी इट वाज अ पार्ट ऑफ राहुल द्रविड्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डील कि अगर मैं तभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगा अगर प्रसिद्ध कृष्णा को तुम सेलेक्ट करोगे एटलीस्ट एक, I बिकॉज mean, बोथ आर फ्रॉम बैंगलोर, सो he's got 21 innings and 49 wickets, average of इन 17, first class. इन रणजी, Obviously, विच इज in मोस्टली रणजी। भाई बहुत बकवास है यार ये तो। so दिस इज क्रैप मैन, आई लाइक डोंट सी रणजी हिम में प्लेइंग, वही वही शुड है, हैव। जैसे वर्ल्ड कप में जैसे पानी लेके आता था वैसे ही लेके आएगा भाई, और क्या। जब आपके बट पास दिस इज सो लाइनअप में बट शामी, दिस इज सिराज सो और बुमराह हो तो फिर आप कहाँ से कुछ कर पाओगे? शमी पे स्टार लगाया है इसके, जैसे कैन सी, आई डोंट नो व्हाट एक्स्ट्रा। That's because of the injury, because he went to a surgery which is expected to heal up, but obviously that is subject to fitness. Even if Siraj is not ready, they have not put a placement down. So I think they're confident in terms of saying कि भाई हो जाएगा, but एक लगा देते just to say कि थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा अगले एक महीने को। मेरे हिसाब से यार साउथ अफ्रीका कंडीशन है, वो कश्मीर वाला बॉलर कौन था यार जो 150 प्लस? उमरान उमरान मलिक। मलिक। ही शुड हैव बीन इन दिस टीम इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध मुझे कृष्णा। तो सरप्राइजिंग है वो किसी टीम में नहीं था भाई, ओडीआई में भी कंसिडर नहीं किया उसको, T20 में भी नहीं कंसिडर किया, जबकि वर्ल्ड कप पता में नहीं। दिख रहा था कि साफ साफ कि इंडिया को एक प्योर पेस बॉलर चाहिए जो सिर्फ भाई 160 155 करा इंडिया में तो चलो ठीक है, समझ में आता है। हम्म साउथ अफ्रीका में तो होना चाहिए ना भाई, मतलब मतलब मैं, यू आर राइट कि प्रसिद्ध कृष्णा हम्म टीम में नहीं आएगा, बट उस जैसे बॉलर्स के लिए दिस इज सो डीमोरलाइजिंग, राइट? कि हमारे कंडीशंस हैं ये, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग को मदद मिलती है वहीं पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और रही बात कि भाई वो मार बहुत खाता है, सो प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 68 फॉर 0 उसको या तुमने सेलेक्ट कर लिया है, तो व्हाट रैशनल, आई डोंट नो, बट या वेरी हैप्पी कि अपने भाई कोहली और रोहित विल बी देयर। एंड रोहित ने जो अपनी इम्प्रूवमेंट करी है टेस्ट बैटिंग में, the amount of resilience he has shown, the patience that he has shown while batting, I think he's the, I think so right now, just going by form, he's the best test batsman that we have, right? So very happy that he'll be a part of this. या आई थिंक वेरी एक्साइटेड, बट विराट कोहली की भाई बात करनी है, बहुत दिनों का विराट रेस करे हुए, और ट्विटर में वॉर्स में मजा आ रहा है देख के, विराट कोहली फैंस रोस्टिंग रोहित शर्मा फैंस एंड शर्मा। There's always been this whole like narrative that Rohit Sharma's lost what, three big tournaments, ICC tournaments in the last year, and Hmm. three or four, something like that, big as a Agree. captain. And he's still being portrayed as someone who should lead India in T20s in the future Exactly. England. Whereas Virat Kohli was pushed out of T20s, For the same reason. and actually he pushed himself out of T20s क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि भाई मेरा टाइम हो गया कैप्टनसी का। एंड देन गांगुली वाज लाइक, भाई अगर आप दरवाजे पे खड़े हो तो आप पूरा बाहर जाओ, आप दरवाजे पे मत खड़े रहो, हवा मत अंदर आने दो। एंड दे किक्ड हिम फुली आउट। तो क्या थॉट्स है कि यार शुड रोहित रियली बी लीडिंग इंटर, भाई टेस्ट मैच में तो मुझे पहले से नहीं समझ में आता था, मैं तो साफ साफ कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, मैं आई स्टैंड बाय दिस, चलो व्हाइट बॉल में मे बी ही इज बेटर देन कोहली, बट टेस्ट मैच में नो कैप्टन हैज एवर डन बेटर देन विराट कोहली, वेदर इट्स MS धोनी, वेदर इट्स रोहित शर्मा, वेदर इट्स भाई Agreed. राहुल द्रविड़ या सचिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, भाई जब 90s में थोड़े टाइम के लिए करता था, नो वन हैज डन बेटर देन विराट, एंड द एग्रेशन ही हैज शोन, मतलब कोई मजाल है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जाके चार फास्ट बॉलर के साथ खेले और जीत के आए, लॉर्ड्स में 60 ओवर्स में इंग्लैंड को ऑल आउट करे फाइनल डे में, विच इज देयर होम ग्राउंड, एजबास्टन में उनको डिस्ट्रॉय करे, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 2 years in a row लेके आए, एंड देन इवन इन ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर, भाई लग तो यही रहा कि इंडिया जीत सकती है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी टैलेंट है। तो 2 पॉइंट तुमने बोले, पहले पॉइंट पे आता हूँ कि रोहित शर्मा ने 3 हमको आईसीसी टूर्नामेंट्स हरा दिए। हम्म भाई विराट कोहली को आप क्यों हटाया था आपने? बीसीसीआई ने जो भी पॉलिटिक्स, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, पॉलिटिक्स करके उसको हटाया था, क्यों हटाया था? क्योंकि द ओनली थिंग दैट ही लैक्ड was that he didn't had an आईसीसी ट्रॉफी, फाइनल में हार जाता था, सेमीफाइनल में हार जाता था, राइट? रोहित शर्मा ने क्या किया? आफ्टर 2 years वी आर एट द सेम स्पॉट, कहाँ हम ऊपर गए? ठीक है भाई, ओडीआई में सेमीफाइनल से फाइनल, दैट्स ऑल, दैट इज हिज अचीव, या दैट इज द ओनली अचीवमेंट दैट ही हैज। मैं तो, एंड देन द फैंस आर लाइक वी आर विद यू कैप्टन, वी आर ये वी आर वो, जबकि 2019 में जब हम हारे थे, नो, द फोकस वाज completely not on विराट कोहली, इट वाज completely on MS धोनी। अभी जितनी रील्स बन के आ रही हैं कि रोहित रोता हुआ जा रहा है, वी फील फॉर द कैप्टन, वी स्टैंड बाय यू कैप्टन, कितनी बार वो रील्स आई थी 2019? आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल, चलो उस समय उतनी रील्स फेमस भी नहीं थी इंस्टाग्राम पे, तो कितने ट्वीट्स आए थे, कितने फेसबुक पोस्ट आए थे कि वी सपोर्ट यू कैप्टन? कुछ नहीं आया। सो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि रोहित शर्मा, आई वॉज अ ह्यूज रोहित शर्मा फैन, ह्यूज रोहित, पहले मैं धोनी फैन था, देन आई मूव टू बी आई एम नेवर अ प्लेयर फैन, बट आई काइंड ऑफ सपोर्टेड
Dhoni, then I moved to Virat, and now obviously I moved to Rohit. But now I kind of transition more on Virat side, सीइंग कि उसके साथ जो injustice हो रहा है. रोहित फैंस, भाई रोहित की पीआर फैंस बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार. मतलब किया क्या उसने, वही चीज रिपीट करके रख दी हम लोगों के सामने जो कोहली कर रहा था. एंड आई डोंट नो मैन, इट्स सो इनजस्टिस फॉर विराट कोहली. एंड मेरे लिए सबसे बड़ा हिट जो होता है ना, 2019 सेमीफाइनल हारे थे हम लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आया था? विराट कोहली आया था ना. ही एग्जैक्टली स्टूड देयर इसमें एंड ही सेड द्रविड़, के भाई 45 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट, वर्ल्ड कप को और 10 दिन हो गए, नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम रोहित शर्मा, नॉट अ ही इज सिंगल वर्ड, डिफरेंट. नॉट अ सिंगल वर्ड, येट ही इज ऑन वेकेशन. नो डाउट भाई, ही डिजर्व्स दैट वेकेशन, ठीक है, ही इज वर्कड हार्ड फॉर इट, बट नॉट अ सिंगल वर्ड. यस एंड आई एम सपोज टू थिंक विराट कोहली की गलती थी. दैट्स व्हाई ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टन. एग्जैक्ट. एंड कमिंग बैक ऑन योर सेकंड पॉइंट, couldn't agree more कि टेस्ट टीम का बेस्ट कैप्टन, forget about India, across all teams has been Virat. He has been that guy. और ये मैं, there has not been a single day in my life, obviously since he captain, जब से I have not said this कि he is the best. जो 5 दिन जो वो एक एनर्जी भरता है पूरे टीम में, लाइक डे 1 से लेकर डे 5 तक टीम इज एट द सेम इंटेंसिटी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया इन टेस्ट वर्सेस एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड इन टेस्ट. वो चीज रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, जो भी बीच में कैप्टन है, एंड व्हेन आई से दिस आई सी दैट टेस्ट स्क्वाड में ना रहाणे है ना पुजारा है. सो इज दैट, डज दैट इंडिकेट कि पुजारा और रहाणे की एरा खत्म हो गई? विल गेट ऑन टू दैट. बट मैं उसी में आने वाला था. अभी लाइक आई डोंट नो मैन, जितने भी मैंने कैप्टन उसके बाद देखे, वी हैव लॉस्ट सो मेनी गेम्स डे 4 और डे 5 पे, वेयर बिकॉज वी डिडंट हैड दैट इंटेंसिटी. कोहली आई अकेला थिंक कितना ही करेगा यार. सो मेनी ओकेजन्स कोहली हैज गॉन ऑन टू टेल एडवाइस रोहित शर्मा, व्हिच मतलब एटलीस्ट हमको बाहर बैठ के तो यही लगता है कि रोहित जस्ट, सो आई डोंट नो. आई कंप्लीटली एग्री. मैं संजय विराट कोहली मंजरेकर को का लार्जर, यूजुअली सॉरी मैं गो अहेड. सॉरी मैं संजय मंजरेकर का यूजुअली बहुत मजाक उड़ाता हूँ. आई थिंक वन लाइन ही मेंशन्ड वंस, जो मैंने सुनी थी, एंड आई स्टिक बाय दैट, एंड आई थिंक दिस जस्ट सम्स अप विराट कोहली कैप्टनसी. वो कहता था कि विराट कोहली एक ऐसा टेस्ट मैच कैप्टन था जहां पे वो ड्रॉ के लिए कभी नहीं खेलता था. भाई टेस्ट मैच यूजुअली टीम्स प्ले टू ड्रॉ, थर्ड डे तक डिसाइड हो जाता है कि भाई ये ड्रॉ का. एग्जैक्टली. वो ये करता, वो टीम सेटअप ऐसी करता था कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार मंजूर है मुझे, लेकिन ड्रॉ मंजूर नहीं. और मैं एग्जैक्टली. जीत के आया जीतने के लिए हूँ, और ड्रॉ नहीं होने दूंगा भाई. या तो मुझे मुझे इस टेस्ट मैच का रिजल्ट चाहिए, और वो He made रिजल्ट that he उसकी made उसी that के फेवर ही में statement. गया. He made that statement. I remember it was India's tour of Australia, हम्म. and धोनी को इंजरी हो गई थी. That's why he was out of the team, and Virat got the interim captaincy. Adelaide test था. We were chasing some 380 or 390. I'm not sure. He refused to go for a draw game. He single-handedly scored a century, and I think after he got out, we started playing a bit negative. I don't know, but जब तक वो खेल रहा था, he never thought about drawing the game. जो पहले मैच में उसने कैप्टनसी करी है से लेके लास्ट मैच में उसने कैप्टनसी करी, we never played for a draw. Give me a game in which we were trying to draw. There would be few, नेवर. but very less, very less. सो मैं अब यार अभी भी वही कहूंगा कि ठीक है, जो उसका क्लैश हुआ गांगुली के साथ, गांगुली इज नो मोर इन द बीसीसीआई पिक्चर. लॉस किसका हुआ? इंडियन क्रिकेट का लॉस हुआ यार. मतलब एंड विराट, सो वही है कि ही शुड हैव थॉट अबाउट द लार्जर. ये मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि ही शुड हैव थॉट अबाउट द लार्जर पिक्चर एंड कंटिन्यू टू बी द टेस्ट कैप्टन. आई नो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे, बिकॉज द वे उसको ट्रीट किया गया, यू डोंट इवन ट्रीट योर एनिमी लाइक दैट, जिस तरह से ट्रीट किया, एंड फॉरगेट अबाउट द बेस्ट कैप्टन दैट यू हैव एवर हैड. तो वहां पे उसने जो कैप्टनसी छोड़ी, आई थिंक ही कुड हैव एक्टेड अ बिट मैच्योर, एंड उसकी जो रिस्पेक्ट है, इवन रोहित शर्मा रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट एज अ टेस्ट कैप्टन. सो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से टेस्ट कैप्टनसी, बट Exactly. छोड़ दिया वी अब. Exactly. Moving on, just like India is trying to move on from Ajinkya Rahane and Chiteshwar Pujara, two players जो I'm very proud of this segment movement जो मैंने अभी किया है moving on वाला. But Ajinkya Rahane and Chiteshwar Pujara, just really quickly touching on that. I think it's a very good. I think it's time. By Pujara, no doubt, he's done great service. His, I think, most memorable matches are not the ones where he scored 50s and 100s, but the ones like Border Gavaskar Trophy में जहाँ पे उसने like a lion just Once, took and yeah, took once. and took and took and took. भाई जितनी बॉलें करानी है, बॉडी में मारना है, जितने तुम लोग को The ब्रूजेस ones देने where he दे दो. scored more bruises Exactly. than runs. Exactly. And those are the reason he was always in that team. But I think with like other formats, test match भी एक ऐसा format हो गया where you need players who can get off the mark and start scoring and this and that in certain situations. Which is why I think, और उसका age factor plus with Gaikwad coming in, Yashasvi Jaiswal coming in, Shreyas Iyer fitting into this team as well, you kind of think about it and you can say कि चलो भाई इनको भी chance देना चाहिए, क्योंकि somewhere
these guys deserve it as well. डू यू आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं रणजी उतना फॉलो नहीं किया हूँ Hmm. जो ये वाला सीजन है, बट इज दिस यशस्वी सिलेक्शन बेस्ड ऑन हिज रणजी परफॉर्मेंस और इज इट बेस्ड ऑन हिज लाइक आईपीएल I think West Indies was a very good tour for him, जिसमें 2 centuries थी. इन But टेस्ट? also, हाँ, in test matches. Was it हाँ, it was West Indies जिसमें विराट कोहली ने भी एक score करी, not wrong. It was that series last year. Plus, obviously that brought his average, that specific series average 88 था. First class, if we're talking about it, I'm just going to bring it up really quickly. See, he has got an average of 81 in 29, या so with a strike rate of 70, so pretty fast. Oh yeah, absolutely. फिर तो भाई thoroughly deserved. Sorry यशस्वी for doubting you. No, Yeah, no, I think I've seen did him great back. job. He's been dubbed as the next kind of up there with the ranks of being able to perform to the level of Kohli and Sachin, and obviously Shubman. You know, मैं we've घूम we've been we've been having that comparison of King and Prince. Yashasvi is also kind of there, but it's very weird. You know, बहुत ही कम players दिखते हैं जो आपको first class खेलते हैं, मतलब टेस्ट मैच स्क्वाड में है, T20 स्क्वाड में, बट ओडीआई में नहीं है. एंड यशस्वी इज वन ऑफ दोस. आई डोंट नो इफ एक इट्स लाइक. चीज मैं तुमसे पूछूंगा फ्रॉम माय मेमोरी ओनली कि जितने मुझे याद आती है सीरीज साउथ अफ्रीका में कोई भी टीम जाती है, बीट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, एक चीज मैंने देखी है, दे ऑलवेज एटलीस्ट एक टेस्ट की एक इनिंग होती है जिसमें दे बोल आउट द टीम इन 40 to 50 के स्कोर, विच मीन्स दैट बहुत डिफिकल्ट है वहां पे उनके फास्ट बॉलर्स को. उस समय तो खैर बात अलग थी, स्टेन, Exactly. मॉर्कल, Wait, फिलेंडर. not even हाँ, that way. 2021, 2022 series, India went and lost the game, right? 2-1 series हारे थे वाली विराट एग्जैक्टली. कोहली की जो I think last series. यस, तो मेरा पॉइंट है कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, ये जो हमने बनाया है विद द लाइक्स ऑफ पुजारा नॉट बीइंग देयर, हु वाज द रेजिलिएंट गाय जो एक स्टेबिलिटी लाता था नंबर 3 पे. डू यू थिंक वी विल बी एबल टू काइंड ऑफ सस्टेन, और लाइक हम कोई ऐसी इनिंग नहीं देंगे 6 इनिंग में से जिसमें हम 100 से कम पे आउट हो जाएं? I think it's very hard to predict because देखो साउथ अफ्रीका भाई बहुत डोमिनेंट अपने, दे गॉट. इतना समझ लो कि आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतना स्लेज किया कि उनको मजबूर कर दिया चीटिंग करने के लिए. इतने अच्छे आपने खेला वो सीरीज. एबी डिविलियर्स ने जो ट्वीट किया था याद है, दिस सीरीज विल बी वन टू रिमेंबर. फिर उसी के बाद 150 मारे थे अगले टेस्ट. फिर यस. इंडिया को लास्ट ईयर आई थिंक वर दे वन टेस्ट मैच डाउन, और फिर दे वन द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैच, समथिंग लाइक दैट, अगेंस्ट ऑल ऑड्स brought it back. तो lack of experience could be key. Test match में you need a lot of experience. We always talk about this कि भाई it's not about the number of runs, it's not about the strike rate, it's about the number of times you've been out there on the pitch. But I think Virat Kohli has the temperament. So for me, Pujara फिर isn't से that big of a loss maybe. I don't want to jinx it and say कि Kohli के role change करो, but yes, Kohli is someone who is sensible enough to know ये बॉल मारनी है, ये बॉल नहीं, ये बॉल. So I think India has got a good balance, good way. भाई 17 test matches है अगले cycle में before the test championship final. So this is a perfect setup to go into that Australia series, which is right at the end, which will hopefully become a decider where if India makes it to the final, इस बार depending on ऑस्ट्रेलिया how में it होगी goes. उस And I think this time it's 5 test matches instead of, so it's even longer tour. वो गाबा वाले टेस्ट मैच के बाद अब ये पहला टेस्ट होगा ना ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए पूरे pumped up होंगे और वो भी पूरे pumped up. But yeah, I think generally the consensus is कि भाई T20s India should be able to win it. ODIs will be very tough and test matches will be the toughest of ones. So मेरी predictions उसमें भाई 2 test matches में I think India is only playing 2 tests. Would be somewhere between भाई I think 1-1, क्योंकि एक draw हो सकता है. I think 1-0 भी हो सकता है. It's a very highly likely target. मुझे लगता है एक draw हो जाएगा, एक इंडिया जीतेगी या तो साउथ अफ्रीका. It can go either. Test match team साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी weak है, तो maybe India have the upper hand plus bowling experience with Siraj, Bumrah, Shami being there, and then the senior top players with Kohli and Rohit being there. So overall, कोई भी टीम हो साउथ अफ्रीका की, आई थिंक डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन अ टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एनी कोच. आई रेट इट लाइक, मैं ये कहूंगा कि आफ्टर like a World Cup win or a ICC trophy win, defeating South Africa in South Africa, or defeating Australia in Australia, or defeating England in England is the in tests is something which the coach puts in his resume at the top. तो बहुत difficult है भाई, मुझे तो white wash लग रहा है. मतलब again, and if we are coming down to वही कि मतलब विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो I hope we get out of this zone by the end of 2024. ये 2024 का गोल हो सकता है हमारी इंडियन टीम का कि लेट्स नॉट गेट इनटू कंटिन्यू टू बी इन दैट फेज कि भाई रोहित है, विराट कोहली, वी नीड टू मूव ऑन. नॉट मूव ऑन इन द सेंस कि उनको टीम से ही निकाल दो, बट वी नीड टू हैव मोर प्लेयर्स हु स्टेप अप एंड बी दैट रिलायबल फोक्स जिसपे हम बोल सके हाँ भाई
केएल है, हाँ भाई यशस्वी है, तो उस जोन में जाने का एक गोल होना चाहिए। देखो, मैंने वर्ल्ड कप में बोल्ड प्रेडिक्शंस करी, कुछ सही हुई, मैं इसमें भी बोल्ड प्रेडिक्शन, मेरा बिलीफ है इस इंडियन टीम में, और वो बिलीफ तोड़ने के लिए ये लोग भी हैं, कोई मसला नहीं है। बट वो डायलॉग्स नहीं होते, ये कुछ रिश्तों की, कुछ रिश्तों का रीजन नहीं होता, ये होते हैं बस वो, एंड इट्स वन ऑफ दोस, एंड इसीलिए मैं इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहूंगा। एंड आई नो वी सेड विल टॉक अबाउट आईपीएल ट्रेड्स एंड ऑल दैट, बट ये डिस्कशन आई गेस बहुत डिटेल था बिकॉज वी हैड टू डू इट इन अ वे वेयर everyone understood the importance of this series in terms of the World Test Championship as well as preparations for the T20 World Cup, क्योंकि वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में वर्ल्ड कप होगा, तो पिचेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफी फास्ट भी हो सकती है, काफी स्लो भी हो सकती है, टू अर्ली टू कॉल काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इट्स perfect to see these youngsters get a chance, and then obviously the senior players returning for the test match series, making sure कि भाई another World Test Championship final, let's continue that dominance and hopefully भाई ट्रॉफी हाथ में तो आए, chances increase करते हैं, let's see something can happen. On the other hand, thank you guys for watching, thank you guys for listening, tuning in, make sure you subscribe, make sure you leave a like rating. So yes, thank you very much for being on again, great discussion. Follow all of our social media pages for the latest news regarding cricket, IPL, टेस्ट मैचेस, भाई सब कुछ आने वाला है इस चैनल पे, एंड ऑब्वियसली थोड़ा कंटेंट अभी धीरा है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड, विल बी गेटिंग बैक ऑन इट एंड विल होपफुली बी एक्सपैंडिंग वेरी, आई एम गोना बी पुटिंग मोर आवर्स इन प्रोजेक्ट, so be seeing a lot more content and a lot more content as well. So thank you guys for watching in, and we'll